तो किसी भी सिचुएशन को जो भी हमें दी हुई है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको मॉडल करते हैं हम क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे सामने आता है, वो एक्सप्रेशन उस चीज को मॉडल कर रहा होता है और फिर हमें ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमें पता चलती है उसकी वैल्यू। उस एक्सप्रेशन की जैसी हमें वैल्यू मिल जाती है तो हम उसको इक्वेट करते हैं, तो एक हमारा इक्वेशन बन जाता है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसके लिए वो मॉडल बना है, उस सिचुएशन को उस में एक प्रॉब्लम हमारे सामने जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमें रूट्स चाहिए होते हैं। तो रूट्स पाने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। सो इट्स बिकम्स वेरी इंपेरेटिव कि हम फैक्टराइजेशन को अच्छे से सीख लें। ये फैक्टराइजेशन के पीछे जो इंट्यूटिव आइडिया है, हमारी जो एक नोशन है फैक्टराइजेशन का, उसको सीखना बहुत जरूरी है। हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, डिफरेंट वेज है फैक्टराइजेशन करने के, हम उसमें स्ट्रगल करते रहते हैं। हम ग्राफिकल वे में हम उसको फैक्टराइज करने के, फाइंडिंग आउट द रूट्स, और हम कई बार श्रीधराचार्य जी, द ग्रेट श्रीधराचार्य, उनका फॉर्मूला जो कि डिस्क्रिमिनेंट, उसको यूज करके हम रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, हम निकाल लेते हैं। और हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑल्सो हम यूज करते हैं। तो आज मेरा फोकस रहेगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके हम कैसे इजीएस्ट वे में उसको समझ सकते हैं, अपना एक नोशन डेवलप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँ ये रेक्टेंगल एक सर्टेन एरिया को कवर करता है, तो वो एरिया कैसे पता करेंगे? हमें उसके लिए इसकी दोनों साइड्स चाहिए। अब मैं बताऊँ, द लॉन्गर साइड इज x एंड द शॉर्टर साइड इज 5, देन ऑब्वियसली द एरिया विल बी यस 5x। सो ये 5x जो है ये एरिया है। बट इफ आई चेंज द साइड नाउ, इसका एक साइड जो लॉन्गर साइड इज x एंड द शॉर्टर साइड इज x minus 5, देन व्हाट विल बी द एरिया? हैव अ थॉट? x square minus 5x। अभी हमें क्या मिला? x square minus 5x is the expression for the area of this rectangle that is in front of you. So आपको मिल गया एक quadratic expression जो कि बता रहा है, जो कि मॉडल कर रहा है the area of the rectangle that is in front of you. इसे कहते हैं formation of quadratic expressions. Alright, अभी हम आते हैं the point of factorization. आपके सामने एक स्क्वायर है, द साइड इज x यूनिट्स, तो ऑब्वियसली इसका एरिया x स्क्वायर होगा। तो हम इस स्क्वायर को x स्क्वायर बोल सकते हैं। अच्छा, एक ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, और एक थर्ड थिंग इज दिस वन। दिस इज अ स्मॉलर स्क्वायर, ऑलराइट, दिस हैज साइड 1, सो दिस इज x स्क्वायर एंड दिस हैड साइड 1, its area is 1 multiplied by 1, should be 1 square units. So इसको हम x square बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। एंड अगर ये आपके सामने रखूं मैं, so इसकी ये वाली जो इसकी the breadth of this rectangle is 1 and length of this rectangle is x, so this becomes the area x multiplied by 1, so x. So now for this activity, ये x square हुआ, ये x and this 1. Let's form some expressions with this. Okay, अगर मैं ये लिखूं, for example, this is the only expression that I have in front of you, x square plus x plus 1. If I add one more, so it becomes x square plus x plus 2. I add one more x, so it becomes x square plus 2x plus 2. All right, like that. Okay, now मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन रख रहा हूं, ये बनाता है x square plus 5x and plus how many of these ones are there? Plus 6. Can we factorize this expression? इसको फैक्टराइज करने के लिए, इस पर्टिकुलर मटेरियल के साथ में फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास में एक ही मॉडल बनता है कि क्या हम इसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। दिस होल मटेरियल दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस, दीज ऑल ब्लॉक्स कैन बी अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। लेट अस ट्राई। अगर हम इसको सबको एक ही साइड में अरेंज कर देते हैं तो मुश्किल होगा, क्योंकि ये 6 हैं और ये 6 यहां पर तो बिल्कुल नहीं अरेंज हो पाएंगे। तो कोई और तरीका है? तो ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करते हैं। अगर मैं ये 2 यहां पर ले जाता हूं, ओके, अब मैंने इसको यहां पर ऐसे अरेंज कर दिया है। आप देखेंगे कि अगर मैं ये वाली साइड देखता हूं, सो दिस इज x plus 3, और अगर ये वाली साइड देखूं, दिस इज x plus 2. So now there are 2 factors of this particular expression. Expression was x square plus 5x plus 6. The factors are x plus 3 and x plus 2. All right, this is a factorization using this concrete material. So as the convention
टेल्स अस कि हम नेगेटिव के लिए रेड कलर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये अगर 5 मैंने ऑब्वियसली इसकी साइड्स भी x है एंड 1 है, तो ये x बन जाता है, बट दिस इज अ नेगेटिव x। ओके, कलर कोड किया है इसको। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, इसको भी उसी तरह अरेंज करेंगे, क्योंकि द एम इज द जॉब एट हैंड इज टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने इसको एग्जैक्टली जैसा लास्ट टाइम अरेंज किया, इसी तरीके से यहां पर अरेंज किया है। इससे फर्क क्या पड़ा है कि अब ये पूरा रेक्टेंगल तो मेरे सामने है, बट इफ आई सी द साइड्स इट इज x एंड दिस रेड कलर सेज इट्स a -3, so the side, it tells us that the side of this rectangle is x minus 3 and this side is x minus 2। यहां पर एक लिमिट आ जाती है हमारे सामने कि ये मटेरियल हम सिर्फ उन एक्सप्रेशंस का फैक्टर करने में यूज कर सकते हैं जहां पर हमारे रूट्स रियल हैं और इंटीजर्स हैं। जैसे ही रूट्स हमारे फ्रैक्शनल या रैशनल रूट्स हो जाते हैं या इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं, तो वहां पर हम इससे काम नहीं कर सकते। ये मटेरियल, ये इसकी एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ये वाला एक्सप्रेशन लेता हूं जो मैंने शायद शुरू में भी लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको मैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन करने की कोशिश करूं, तो वो हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर इफ यू नो इट, ये आपको हमेशा इमेजिनरी रूट्स देता है। तो यहां दिस मटेरियल कैन, दिस मच इट कैन टेल यू ऑलवेज कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट फैक्टराइजेबल, इट विल गिव यू इट्स रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, सो ये एक इंसाइट हमें मिल जाती है, कि डेवलप हो जाती है। ऑलराइट, अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, हाँ, उस मेथड पे जाने से पहले ये जो हमने किया ये बहुत जरूरी है। जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड लेट अस मूव टू कंप्लीशन of square and finding out the roots of a given quadratic expression and equation. Okay, so when we talk about we have just done one activity to understand the factorization of algebraic expressions, and now I am now taking you to the pictorial way of doing it. So we have done concrete way, now I am coming to pictorial way. To understand this particular method and doing the factorization, this is going to be very easy for you to understand. Okay, so let's take one simple example, like x square plus 2x plus 1 is equal to 0. Let me take, you know it already, you know that the roots of these equations, the factors of this equation is x plus 1 and x plus 1. All right, so but how to do this using a picture? So I am using this bar. Now when I have taken this bar, you please make it a point that this equation I can rewrite as this: x square plus 2x is equal to -1. Alright, so I will make two parts of this rectangle. This will show me x square plus 2x and this will be -1. Alright, so I'm using bar modeling here. If this is x square plus 2x, I will further divide this into two parts. How does bar modeling help in understanding these factorization method? I will tell you. So now this is -1, this is no change here, but here I am just putting this into two parts. All right, for suppose this is x, this side of this rectangle. If this is x, so this much side I can take till here, this becomes x, and I have got one x square here in the shape of a square, obviously. So I am left with 2x here. Okay, so if I say that this is x square and this is 2x, next step mein I simply need to break this into two pieces. Okay, I will do it here only, into two equal parts. So if this is 2x, obviously this side here is x and this side is 2. When I say this side is 2, then this much is 1 and this much is 1. Look at it carefully.
my aim is to complete this square. Like I will take this one x square here, I'm taking this out. Now this one piece I am taking as it is from here, and I'm keeping this block here. This side was 1, this is x, as you know, this is completing this one edge to edge. Now this one I'm taking out and keeping here. See, it becomes very easy and intuitive for you to understand. This side is 1, this is x obviously. Now this area is remaining open. So if I need to fill this area, I need to put in one block here to complete this square shape. What this would be? Obviously, if I see this side is 1, this side is 1, so the area of this block will be 1. Now, it is equal to this part, means minus 1, that I'm keeping like this. Here I have added 1, I will add 1 as well. So here it shows me that x plus 1 whole square is equal to actually 0 minus 1 plus 1. Okay, it means I need to take this out of the square, and I have to say x is equal to x plus 1 is equal to 0, and from here it gives me x is equal to minus 1. So this is one root of this equation, though there are always two roots of quadratic equation, so both the roots are same. And all right, now I will take a little challenging example how to do it using this method. Now I have taken this another example. There is an equation x square plus 15x plus 9 is equal to 0, and you can see I can rewrite it like this. Okay, when I have written, so this bar I am dividing as usual, as I told you in the earlier example. This shows x square plus 15x, and this shows minus 9, and these both are equal, and that's why there is this halving point here. Okay, now when I say this is x, okay, and this is a pictorial method to do factorization. You can tame any equation, given equation, using this method. Okay, and this method is particularly useful when the roots are not integers, they are fractions or imaginary. Okay, so this much is our x square, and this is 15x, so obviously this will be 15, and this side is, you know, x, so this becomes 15x, and this is minus 9. So from here I will take this out and I'll keep here, say x square. Again, as we discussed, breaking this into two equal parts having equal areas. Okay, so this part will come down first. This side is 15, so half of that is 15 over 2. 15 over 2 here, because I have divided this side only, not this side. All right, and this is x. Now to complete the square, I need to add this one block, and area of this block is understood to be 15 over 2 whole square. This side 15 over 2, this side 15 over, the area will be. Now this is equal to minus 9. Step, I added 15 over 2 whole square, so I will add this side also for the sake of balance in the equation. So what I can write, minus 9 plus 15 over 2 whole square. Okay, now ultimate aim is to get the value of x. To get the value of x, first we have to take it out from the square, so we have to take the square root from both the sides. So x plus 15 over 2 will be is equal to square root of this guy, this quantity here, 225 over 4. All right, now I have worked it out, and it remains, I'm sorry, my ink is going down, x plus 7.5 is equal to, when we do the calculation, so it comes out to be plus minus 6.88. I'm sure that you can simplify this one. I have worked out
the roots, the two roots of this equation that we have taken are minus 0.62 and minus 14.38. Actually both are negative roots of this equation. Alright, you can always check like putting the value here. Okay, so now using this CPA method, you can very easily get an idea that how Shri Dharacharya ji reached to this conclusion that the roots of any given a standard form of equation is this one. So any given quadratic equation was minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a.